Okay, so we'll start. First, let me share the screen for you. And Welcome. Ayurveda Pain Management Series. Today we are going to be anatomy of hip joints, and Dr. Nikhil Gupta, MS Ayurved, will explain you total anatomy of hip joints, which will help us to which, what, and how we can treat some cases in this area, and what type of diseases we should not touch. That will be come in these later lectures. So I hand over to Dr. Nikhil Gupta start his lectures. He has made a lot of work for this anatomy work, and I'll be impressed that he has done very good. The AI and other interaction corrections and at the mark, above the mark to the subject. Dr. Nikhil Gupta. a very good evening to everyone. Thank you so much, sir, for a great introduction. जो भी मैं हूँ is because of Dr. Mahesh Sanghvi sir. His teachings, his blessings, his clinical examination is very good. Sir is a very good teacher. Everyone loves learning from sir. His technique, his medicines, the way of talking. It is very important. So I'll start sharing the screen, and today's session is going to be on clinical anatomy of hip, जिसे हम कमर कहते हैं सरल शब्दों में. So I guess is my screen visible to everyone? If anyone has any kind of questions, they can put their questions in the chat box, and it will be discussed at the last. So Om Dhanvantaraya Namaha. So before starting this session, I would like to thank my guru, Dr. Mahesh Sanghvi sir, my parents, my colleagues, my juniors for their guidance and support. So आज का हमारा टॉपिक रहेगा वंक्षण संधिगत वाता, also known as hip disorders. So this is our 14th session where we will be discussing on the clinical anatomy and OPD में क्या physiology देखना चाहिए हमें. We'll keep it very short. Try to finish within half an hour. So this is my index page. So कमर का तकलीफ लेके सबसे पहले पेशेंट्स क्या आते हैं? So the most commonest hip problem is that there is acute injury. There will be sudden severe hip or groin region में there will be a pain. It may be due to injury or infection. It may be due to trauma or fall history. It may be due to bacterial invasion, swelling, local tenderness, fever. कई सारे कारण होते हैं. कई सारे कंप्लेंट्स लेके पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं. अब उसको डिफरेंशिएट कैसे करें? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. एज इन दिस पिक्चर वी कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज acute hip problems and on the right hand side there is chronic hip problems. जो acute रहेंगे वो सडन, अगर आप उनसे हिस्ट्री पूछेंगे तो यू विल कम टू नो दैट देयर वाज अ सडन और acute history of any trauma, pain, infection. But agar if the patient complains ki if he or she is having pain more than 6 weeks, it is not resolving with conservative medicines, they have tried all the doctors, then you can call it as chronic hip problems. अब hip problems में आते क्या क्या है? Before starting this thing, this is a real image of the hip joint. As you can see,
This is the head, this is the neck, this is the greater trochanter, the lesser trochanter. No need to worry. We'll discuss this in a very easy manner. Whatever is required for the OPD. So this is an 3D image of a pelvis, a femur, the acetabulum, also called as head of femur. Many movements are there. We'll be discussing this. So before starting, what is the definition? What is the definition of hip joint? So जैसे कि ये मूवी का एक इमेज है जब हैरी मेट सेजल, मूवी बाय शाहरुख खान एंड अनुष्का. सो जैसे ही हैरी सेजल से मिला है, सेम प्रकार, द सेम प्रकार इज द pelvis meeting the femur is called as, when pelvis meets hip joint, the femur, it is called as the hip joints. So the bony structures of hip joints क्या क्या होते हैं? So as you can see in this image, क्यों important है हमें जानने के लिए? Because if a patient is completely complaining, the most commonest complaint is like hip joint में pain हो रहा है. It may be avascular necrosis, it may be osteoarthritis, it may be rheumatoid arthritis. किस रीजन में है, कैसे हमारे रिपोर्ट्स पढ़ना है? So before reading the reports, you need to know this is the head of the femur, this is the neck of a femur. The most commonest point of fracture is neck of the femur. ये greater trochanter है. This is the lesser trochanter. Tuberosity, pectineal line, lineal aspera. We'll discuss this everything in detail in our upcoming slides. So जैसे कि before starting this thing, we should know कि pelvis is also called as basin Latin में. In femur, the Latin का मतलब होता है thigh और the lateral shaft, and hip joint का मतलब होता है hip or flank, as we can see in this image. This is an image of a femur. It is very important because femur का जो ऊपरी भाग है, the distal part of the femur has many condyles and epicondyles. ये neck of the femur है, ये head of the femur. It is very important to know. As we can see in this image, there is a normal hip joint, and on the right hand side there is an degenerative osteoarthritic hip joint. So this technical terms, we come across many technical terms. जैसे कि अभी head of the femur, okay, we understand, head है. The neck of the femur, okay, we understand, it is the neck of a femur. But trochanter एक ऐसा शब्द है जिसका मीनिंग हर किसी को नहीं पता होगा. So it is very simple. Trochanter, as we can see in this image, trochanter is a Greek word जिसका मतलब होता है या तो रन करना या तो मूव करना. So because of its action, running or moving, the part is called as greater trochanter. अब सर ये बोन कैसे मूव करता है? वेरी गुड क्वेश्चन. सो इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि जो ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, यहाँ पे बहुत सारे मसल्स गेट अटैच्ड. As it is written, it helps you walk, it helps the patient run, and due to major muscles attachment, you can do all the kinds of movement. तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे बहुत सारे मसल्स आके जॉइंट होते हैं, इसीलिए इसको ग्रेटर ट्रोकेंटर नाम दिया गया है. As you can see in this left hand side image, the doctor is palpating at the greater trochanter. Can you see his hand? Can you appreciate his hand? Yes, this is the greater trochanter. On the right hand side image, the same thing you can see. This is called as greater trochanter. Clinically, ये बहुत ही important है जानने के लिए कि कोई मसल इश्यू तो नहीं है करके. So this is a difference between a greater trochanter जो कि बाहरी साइड में होता है और the lesser trochanter जो अंदरूनी भाग में होता है. ग्रेटर ट्रोकेंटर पे ग्लूटस मसल्स होते हैं, ग्लूटियस मीडियस, द ग्लूटियस मिनिमस मसल्स होते हैं, और अंदरूनी भाग में इलियोसोवास मसल्स होते हैं. तो ज्यादा डीपली नहीं जाते हुए हमारा मेन कंक्लूजन ये है कि द ग्रेटर ट्रोकेंटर जो होता है, अगर आपको वहां पे पेन हो रहा है किसी कारणवश पेशेंट को, तो वी कैन सस्पेक्ट ट्रोकेंटरिक बर्साइटिस. बर्साइटिस माने क्या होता है? जिसमें एक कप शेप रहता है, जिसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहता है. अगर वो सॉकेट जॉइंट में कहीं पे भी इन्फ्लामेशन है, दैट इज कॉल्ड एज बर्साइटिस. ट्रोकेंटर रीजन में है, इसलिए इसको ट्रोकेंटरिक बर्साइटिस बोलते हैं.
On the other hand, the lesser trochanteric is called as iliopsoas tendinitis. The tendon जो iliopsoas tendon होता है वहां पे inflammation होने की वजह से the patient will have a iliopsoas tendinitis. इसीलिए क्लिनिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर क्या होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हिप डिसऑर्डर्स आर देयर? हिप डिसऑर्डर्स कितने होते हैं? 50 या 50 से ज्यादा? आइए लेट्स सी दैट. So this is an image जहां पे we can see different osteoarthritis, rheumatoid arthritis, avascular necrosis, बहुत सारे अन्य डिजीजेस के फोटो है. This is a slide having 29 hip disorders के फोटो. बट क्या हमें सभी जानना जरूरी है ओपीडी के लिए? We are not an orthopedic surgeon that we need to dive deep in. If you need to see in OPD, you should know that these hip disorders are commonly distributed in the 10 major categories, which are first the osteoarthritis hip, यानी कि degenerative disorder यहाँ पे जो दिख रहा है. Next है avascular necrosis. We will be discussing this in deep. Avascular and necrosis. The femoral neck का fracture, intertrochanteric fracture, the trochanteric bursitis जो अभी हमने डिस्कस किया. यहाँ पे can you appreciate the inflammation? Yes, this is a trochanteric bursitis. The labial tear. Can you appreciate this labial tear? The hip dislocation, sacroiliac dysfunction, septic arthritis. मतलब कहीं पे भी infection होने के वजह से if the infection get lodges into the patient hip joint, it is called as septic arthritis. And last but not the least is ankylosing spondylitis. Can you appreciate this white web-like structures? ऐसा लग रहा है कि कोई फ्रीज हो चुका है वो जॉइंट्स. नेक्स्ट, दिस इज अ फोटो ऑफ अ कप. व्हाई द कप इज पुट इन दिस? दिस इज अ चाइनीज कप जिसमें वो विनेगर मेजर करते हैं. सो मोस्ट ऑफ द पीपल माइट हैव हर्ड दिस टू टर्म्स, मोस्ट ऑफ द टर्म्स, बट मोस्टली एक ट्रोकैंटेरिक वर्ड होता है, एक एसिटाबुलम वर्ड होता है. एसिटाबुलम का मीनिंग होता है एसिटम यानी कि विनेगर एंड एबुलम यानी कि स्मॉल वेसल. इसीलिए फोटो दिया गया है कि ये विनेगर मेजर करने वाला एक स्मॉल वेसल है. इसका शेप रिजेंबल करता है टू द हिप जॉइंट, सो इट इज कॉल्ड एज एसिटाबुलम. दिस इज अ पार्ट ऑफ अ pelvis, acetabulum. कैन यू अप्रिशिएट दिस acetabulum सॉकेट इन द इमेज जिसमें हिप जॉइंट लॉज होता है इनसाइड. So that's why acetabulum literally means little vinegar cup. So moving on to the next important thing we need to know in the OPD is articular structure of hips. ये articular structure क्या होते हैं? As we can see in this image, can you appreciate layer by layer? हर joints are made up of bones. अगर खाली 2 bones रहेंगे तो there will be a good amount of friction. सो फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट इस स्लाइड के लास्ट में जो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर है, एज यू कैन अप्रिशिएट यहाँ पे फंक्शंस लिखे हैं. ये आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, इट एब्जॉर्ब्स द शॉक, इंक्रीज द स्टेबिलिटी एंड अलाउ स्मूथ पेन फ्री मूवमेंट. मेन जानने वाली ये चीज ये है कि जब हम एक्सरे, सिटी स्कैन या एमआरआई रिपोर्ट पढ़ते हैं तो इसमें आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स रहते. कैन यू अप्रिशिएट दिस ब्लू स्ट्रक्चर, आर्टिकुलर स्ट्रक्चर? इट इज अ स्मूथ हाइलिन कार्टिलेज. क्या ये रेड कलर का लेब्रम अप्रिशिएट कर सकते हैं? दिस इज अ फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिम विच इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी. कैन यू अप्रिशिएट दिस लिगामेंट जो 2 बोन्स को ज्वाइन करके रखा है, द लिगामेंट, द लेब्रम एंड कार्टिलेज को, ये लिगामेंट है. All these structures have some important work. This is the ligamentum teres. Very important. A synovial membrane. Every joints require a good synovial membrane. And last but not the least, synovial fluid adequate होना चाहिए. ना अति होना चाहिए, ना कम होना चाहिए. Why? Can you see in this image एक severe osteoarthritic है? Can you see the degenerative changes? कितना friction होता है? The reduced space, the inflamed cartilage,
the reduced synovial fluid, how much the patient may be in trouble. So this is an image. I'll play it again. Can you see a person is walking, but as he walks on this watery surface, he slides so easily. So synovial fluid और synovial joint का भी यही काम है कि वो smoothly slide करता है. That's why it is very important to have a good synovial membrane of a patient and a good synovial fluid. Next, if there is not adequate synovial fluid या synovial joint, तो ऐसे जोर से friction लगाना पड़ता है. So the pressure between the two bones is too much strenuous, too much strain, too much. The patient will have so much tension that he will always complain a regular consistent pain in the hip joint. ये एक इमेज है जिसमें you can see that there is shock absorber. जैसे साइकिल में शॉक एब्जॉर्बर होता है ताकि हमें झटका ना लगे. सेम थिंग दिस आर्टिकुलर जॉइंट्स जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं is having the same function. It will absorb all the shock of the patient's hip joint. Next, after discussing this articular structures, next we'll be moving on to ligament. Ligament comes from the Latin word liger, जिसका माने bind करना. किसको बाइंड करता है? बी टू बी, यानी कि बोन टू बोन बाइंड करने वाला स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लिगामेंट. So this is a many ligaments you can see, the joint capsule, the iliofemoral, pubofemoral, ischiofemoral, zona orbicularis, बहुत सारे लिगामेंट हैं. बट लिगामेंट होते क्यों है? क्या कभी किसी ने सोचा है why the bone needs to be attached with the bone? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही इनफ है ज्वाइन करने के लिए. why we require an extra structure called as ligament? Let's see. So this is a movie clip of a movie which everyone might have seen, I guess. ये इंटरस्टेलर मूवी, ऑस्कर विनिंग मूवी है, उसका एक सीन है. So as we can see in the image, देखिए ये जो जॉइंट हो रहा है, this is called as docking system. स्पेस के वर्ड्स में इसको स्पेस डॉक सिस्टम बोलते हैं, जहां पे one part of the space joins to the another part of space and see they are fusing together. अब जॉइंट होने के बाद उसको स्टेबल ले हो जाएगा धीरे धीरे. नाउ इट हैज बीन जॉइंट. Yes, now you can appreciate this, how the speed has become slow, the stable. When two articular surfaces meet together, it avoids dislocation. It avoids dislocation. इसीलिए दो बोन्स का जॉइंट होना बहुत ही निहायती जरूरी है, जिसका काम करते हैं वो ligaments. Same thing was shown in the movie. It is called as space docking system, जहां पे two foreign space materials are getting fused together, interlock हो रहा है to each other. So hip ligaments is nothing but docking system of the universe. यानी कि hip ligaments एक केबल की तरह है, एक tether की तरह है, एक लॉक रिंग की तरह है, that keeps the spacecraft यानी कि femoral head docked to the acetabulum. Can you appreciate this? The femoral head of the spacecraft is getting docked to the acetabulum. अब ligaments जानने का मजा कुछ अलग ही रहेगा. This is joint capsule. As you can see the image, can you appreciate this rim? And can you see this hip joint capsule जो ready है, इसके अंदर socket है. Can you appreciate this socket? This gets fixed into this, and thus it brings the stability in the hip joint. Similarly, this iliofemoral ligament, the pubofemoral ligament, the ischiofemoral ligament docks or binds to each other. इसका एनालॉजी ये है कि ये लास्ट में हम देखते हैं
this ilium of the pelvis gets attached to the femur, तो iliofemoral नाम दिया गया है. Pubic part of the pelvis gets attached to the femur, again तो pubofemoral नाम दिया है. Last है ischium of the pelvis gets attached to the femoral. तो pelvis के 3 पार्ट्स होते हैं, ilium, ischium, pubis. ये तीनों फीमर को अटैच होते हैं और तीनों को अपने अपने नाम दिए गए हैं, इलियोफेमोरल, प्यूबोफेमोरल एंड इशियोफेमोरल लिगामेंट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज जोना ऑर्बिकुलरिस, यानी कि ऑर्बिटल लॉक डॉकिंग क्लैंप. सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि टू जॉइंट्स डिसलोकेट ना हो. ये लिगामेंट्स वो दोनों बोन्स को होल्ड करके रखते हैं. एनी काइंड ऑफ ligament issue will lead to dislocation of the hip joint. So it is very clinically important to know where ligaments come, where muscles come, where the articular joints come, right? So next moving on to the muscles. So muscles को little चूहा भी कहा जाता है, little mouse भी कहा जाता है. क्यों? Because this small mouse moving beneath a cloth. So as कपड़े के नीचे अगर if there is a mouse, if he keeps moving, you can see it on the cloth itself. So because of that mouse, this muscle was named after that. So here is a video of forearms of hand getting flexed and extended. So this muscles of forearms is getting moved, and it resembles like a mouse beneath the skin. It is moving up and down. ये हिप जॉइंट के कई मसल्स है, राइट एंड लेफ्ट में दोनों सेम मसल्स दिए. एक ग्लूटेल ग्रुप होता है, एक शॉर्ट एक्सटर्नल रोटेटर्स होता है, एक एंटीरियर फ्लेक्स ग्रुप्स होते हैं. विल डिस्कस दिस अगेन नाइसली. मसल्स का काम क्या होता है? मसल्स का काम होता है कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, एबडक्शन, एडक्शन. When it moves back, it is called as extension. Can you appreciate this hip joint getting moved? Whenever you examine a patient to move their legs, their hip joint is always involved. So it needs to be taken care of very, very much. You can't ignore the hip joint at all. See, यहाँ पे the leg has been externally rotated. So this was some clinical examination to assess hip joint or hip movements. This is the normal physiology. If there is any issues in the muscles, the nerves, the ligaments, the articular ligaments, there will be some or another hip pathology. As we can see, there is a complex group of muscles, at least 12 muscles यहाँ पे दिए हुए हैं. Let's go to the image directly. Can you appreciate this gluteus muscle, thick वाला muscle? The sartorius muscle, also called as talar muscles. ऐसे कई सारे अन्य छोटे छोटे मसल्स हैं यहाँ पे, ऑब्ट्यूरेटर, एक्सटर्नस, इंटरनस, क्वाड्रेटस, many muscles are there. But the main question is this: clinically कितने muscles important है? Clinically, to maintain the stability, gluteus medius is very thick. It is very important. On the right hand lower side of the image, you can appreciate the flexion is done with the help of iliopsoas muscles majorly. I don't say these muscles are singularly involved. A group of muscles are involved, but the main muscle is this. Next is gluteus maximus, is responsible for the extension of leg backwards. This groin mein there are adductors. You can see these adductors. This is the groin region. Last but not the least, sciatica mimics like a piriformis muscle. तो मसल्स में खाली यही मसल्स clinically important है to do different kind of treatment. Now we are focusing on Agni, Vidya and Marma Chikitsa.
So these muscles are very much important. In our future sessions, we'll be discussing how to do, what to do, and where to do. So nerves क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? नर्व्स पेन कैरी करता है, नर्व्स मूवमेंट करने में हेल्प करता है, नर्व्स सेंसेशन कैरी करता है, नर्व्स हमारे हिप जॉइंट के फंक्शंस को रेगुलेट करता है. इट आल्सो हेल्प्स अ डॉक्टर टू डायग्नोज whether there is any hip pathology, yes or not. If yes, if the patient is having any referred pain, is it the obturator nerve, is it the sciatica nerve, or what nerves? We are going to discuss in our next slide. So basically हमें ओपीडी में जानने वाले ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट और मेडिकली सिग्निफिकेंट ये 5 नर्व्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द सियाटिका नर्व. मोस्ट ऑफ द पेशेंट कंप्लेन विद सियाटिका कंप्रेशन. तो यू कैन सी दिस इमेज, जस्ट पिरिफॉर्मिस मसल्स के नीचे से ये सियाटिका नर्व निकलता है. तो एनी काइंड ऑफ स्टिफनेस, एनी काइंड ऑफ स्प्रेन, स्ट्रेन, स्ट्रेच, मसल टेयर, कुछ भी हो, this will irritate the sciatica nerve, and this is originated from L4 and S3. So you need to know ki whether there is problem in L4 S3 or whether there is problem in this piriformis muscles. Next nerve is femoral nerve. Femoral nerve just anterior में जाता है, हमारे जो groins को touch करते हैं जब patient से. At that time you will feel this femoral nerve. So अगर femoral nerve पे इंजरी हुआ है तो psoas abscess की वजह से हो सकता है. इट मे बी एनी हिप सर्जरी हुआ होगा या ड्यू टू एनी ट्रॉमा ड्यूरिंग द सर्जरी. दिस femoral nerve is very important while hip surgeries. Next is obturator nerve. Obturator nerve क्यों important है? Obturator nerve is important to find out if there is any pelvic fractures, if there is any obturator hernia. Obturator hernia रहेगा तो ये obturator nerve हमेशा compress होता है. Next is superior gluteal nerve. If there is damage in the hips or superior gluteal part, तो उसके nerves का entrapment होता है. Can you appreciate this पतला सा nerve? This is superior gluteal nerve. Last but not the least is the inferior gluteal nerve. ये gluteal नाम से पता चलता है, gluteus एक muscles है, उसके ऊपर वाले nerve को हम superior कहते हैं, उसके नीचे वाले nerve को inferior कहते हैं, and it is involved with L5 and S2. तो सियाटिका नर्व विल गिव पेन टू सियाटिका, या तो डिस्क प्रोलैप्स हुआ होगा. इफ फीमोरल नर्व इन्वॉल्व है तो psoas abscess की वजह से हुआ या तो सर्जरी की वजह से हो सकता है. ऑब्ट्यूरेटर नर्व ये एक मिक्स्ड है, या तो ग्रॉइंस में पेशेंट कंप्लेन करेगा कि पेन है, या तो कोई पेल्विक इंजरी के कारण द ऑब्ट्यूरेटर नर्व इज गेटिंग इरिटेटेड. सुपीरियर ग्लूटल नर्व अगर इरिटेटेड है तो ट्रेंडलबर्ग गेट, the Trendelenburg gait can be appreciated. And inferior gluteal nerve अगर damaged या compressed है, so there will be a weak extension. The patient जब पीछे अपना leg लेके जाएगा तो उसको pain होगा. As we can see, referred pain, specific two types of pain होता है, एक localized pain, एक referred pain. Referred means the pain is getting traveled. जितना उसके nerves जाते हैं towards the periphery उतना pain रहता है. So medial thigh के लिए obturator nerve is responsible. For anterior thigh, femoral nerve is responsible. For superior thigh, lateral thigh pain, the lateral femoral cutaneous nerve is involved. Posterior thigh, the sciatica nerve is involved. हम ये इमेज में अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये मीडियल पार्ट ऑफ थाई है तो ऑब्ट्यूरेटर नर्व इन्वॉल्व है. ये वॉयलेट कलर में एंटीरियर पार्ट ऑफ थाई है तो फीमोरल नर्व का इरिटेशन सस्पेक्ट कर सकते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द रेफर्ड पेन, पेशेंट को आगे पेन है, पीछे पेन है, लैटरल पेन है, मीडियल पेन है, सिर्फ ये 4 जगह से भी जानने से आप पता कर सकते हो कि ऑब्ट्यूरेटर नर्व है, फीमोरल नर्व है, लैटरल नर्व है कि सियाटिका है. पीछे हुआ तो सियाटिका, बाहर की तरफ हुआ तो लैटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व इन्वॉल्व है. It is very important where to do Agni Karma, where to do Vidya Karma, how to do. This is a image कि नी पे भी कर रहे, थाई पे भी कर रहे, because the patient is having a referred pain.
The referred pain, you should know where to do, what to do, how to do, and when to do. Very important. The blood supply is also very important. Blood supply क्यों important है? Because as we see, जैसे कि there is a disease called as avascular necrosis, right? So avascular means क्या होता है? The vessels are getting thrombosed. Vessels are getting ischemia. वहां पे blood नहीं पहुंच पा रहा है some regions. So the hip joints get necrosed and thus it stops functioning and patient को बहुत ज्यादा severe pain होता है vascular necrosis में. So that's why the blood supply is very important. Blood supply में the three arteries you need to know. First is the femoral artery. Again, I say you, anatomy is not that vast. Medial part, femoral. The posterior and the lateral part is gluteal artery. And the medial part is the obturator artery. The three arteries are responsible for the blood supply of a hip joints. So this is an image. This shows the sciatica nerve. The most commonest complaint patient complains in the OPD is a sciatica. Again, this is the same image, very clearly explaining each and every parts. So this is all about anatomy and physiology, what you need to know. Let me give you a 1 minute recap for all these things. First thing, you need to know the ligaments. It helps to bind the hip joint. Second चीज, multiple muscles involved है हमारे hip joint के flexion, extension, abduction, adduction, external rotation and circumduction के लिए. Many blood supply is very important. The femoral, the obturator and the gluteal arteries are involved. So this is not a complex anatomy. Knowing it is very easy when you understand each and every word. So all these images are mostly taken from Google, AI generated just for academic purposes. So I would like to thank my guru, Dr. Mahesh Sanghvi sir, for teaching me these things, how to do it practical and how to learn, how to grasp clinically and OPD. So this is me, Dr. Nikhil Gupta, and this is Ayurved in association with Health Education Academy. The floor is open for questions. Thank you, Nikhil. You covered very well with all these things. Difficult to grasp your knowledge, for Ayurvedic person because we are not been trained like you and expertise in the subject. But whatever I learned something new and I can been now practice well because you have improved my anatomical knowledge. Now this forum is open for the questions. I'll request everybody to ask about only this, the anatomy, physiology, and restricted to that only because treatment part will take on next Friday, and that will be for this everybody. Thank you very much to join us and be with us for the long time. Thank you. Thank We you are so much. waiting. We are waiting for your questions and answers. I guess anatomy and physiology is a thing. This is something theoretical part which needs to be known before practicing in the OPD. Hip joint सुनने में बहुत इजी है कि हाँ कमर है, ये है, वो है करके, बट क्या क्या पैथोलॉजीज हो सकते हैं, कौन से कॉमन केसेस आते हैं क्लिनिकली ओपीडी में, हाउ टू डायग्नोस द पेशेंट कि उसको हिप डिसऑर्डर ही है कि कमर का डिसऑर्डर है कि नी का डिसऑर्डर है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट ऑल दिस थिंग्स. So if there is any clinical questions also, you can put over here. Okay, so I don't think so. We have
that much amount of questions. I think that I have gone in very much speed, or either I have not thought it properly. So our next session will be on clinical examination. Clinically कैसे examine करते हैं patient के hip joints को, and उसके radiological investigations. If blood reports involved है तो कौन से blood reports करते हैं उसमें, it is very important. We'll discuss that in this upcoming session on the Friday, same time, 8:30 to 9:15. Thank you so much, Dr. Rahul. We appreciate your presence over here. Thank you so much, Dr. Pramila. Thank you. So we'll end this session for today. Thank you so much, participants, for joining us today. I hope if there are any things that you want to put on, that you think that we should put on, you can give your suggestion to us on the number 9619940140. We will surely answer you at the earliest. Thank you so much for joining today. We'll conclude this session today here only. Thank you so much.